Now let's discuss about the few trends in the modern periodic table. Now what do I mean when I say trends, right? We discussed that in modern periodic table, we divide that periodic table into the group and the periods, right? तो उसमें property कैसे vary होती है? If you move into period, क्या होगा? If you move down the group, what will happen? This is what we are going to discuss, right? And we are going to discuss very few properties, not all of them, right? So first we are going to start with the valency. तो valency में कौन से changes आते हैं? If we go down the group or if we move across the period, क्या चेंजेस होने वाले? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है? That we are going to discuss about, right? So this is what we are going to discuss now onwards. Trends in modern periodic table. Let's start with the valency first. So valency, right? What is valency? And valence electrons. Just see the basic definition first of all. It is the combining capacity of an atom. किसी के साथ combine होने में, like compound बनाने में, right? जो भी electron you will give it or take it, that is valency. And valence electron is what? The electrons present in the outermost shell of its atom, right? Valence क्या? Let's talk about the chlorine, right? Okay, chlorine के last shell में कितने electron है? 7, right? तो how many valence electrons are there? 7. Now valency, वो सारे के सारे electrons किसी से लेगा, देगा, ऐसा कुछ करेगा? Now chlorine is what? Non-metal. So chlorine is going to accept the electrons. उसे कितने electrons चाहिए? आर्गन जैसा स्ट्रक्चर बनाने में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, right? तो जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, दैट इज दी वैलेंसी. तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7. वो याद रखो, जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो उसके पास प्लस और माइनस होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ द वैलेंसी. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन down the group. So let's talk about the first group only. First group में कौन से elements है? Lithium, sodium and potassium, right? These are the symbol Li, Na and K. Now let's write its electron structure. Very basic one, right? So for lithium we know very well that is 2,1. For sodium 2,8,1 and for potassium 2,8,8,1. Okay, now what we want to talk about, right? Valency. You can see the 1 electron is there, right? So what we can say, the valency, right? Number of valence electron कितने हैं? 1 ही है सब में, right? Valence electrons भी 1 है, और ये lithium, sodium and potassium, they are matters, they are going to give up the electrons, right? They are going to donate it, obviously, right? So valence electron भी 1 है, मतलब डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सेम रहने वाले. देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वैलेंसी भी सेम रहेगी कि नहीं, राइट? सो डाउन द ग्रुप वी कैन कंक्लूड, राइट? सो इन अ ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, right, for all the elements. So all have the same number of valence electrons and the valency. Down the group valence electrons भी same रहेंगे और valency भी same रहेगी, right? This is the down the group. Now just for the electron structure, right? This is just showing an idea. Lithium electron structure, we have the sodium and we have the potassium as well, right? 281, right? 111. We are interested in outermost shell, right? फ्रांसियम मतलब पूरे वो फर्स्ट ग्रुप की कितनी होगी वैलेंसी? 1. So let's see for the second group. Variation along the second group, we have the beryllium, magnesium and calcium, right? Let's see in that as well. 2, 2, 2, right? Valence electrons are same, right? And what about the obviously valency as well? That is also going to remain same. That is 2, 2, 2, right? So for second group also it is same. पहले ग्रुप में वैलेंसी 1 है, दूसरे ग्रुप में वैलेंसी 2 है. Along the group सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहने वाले हैं, right? So this is valency 2. पूरे ग्रुप की वैलेंसी 2 है, right? Let's talk about the last group, which is what? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, right? You know what do they call? They are the what? Inert gases, right? They don't react much क्योंकि उनकी सारी shells अच्छे से भरी हुई है, right? अब देखो उसमें last है 2, 8, 8,
मतलब उनकी कोई वैलेंसी है ही नहीं, सारे शेल्स उनके भरे हुए हैं, राइट। तो याद रखो वैलेंसी, राइट, डाउन द ग्रुप क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैलेंसी डाउन द ग्रुप सेम रहने वाली है, एक किसी की भी वैलेंसी है नहीं लास्ट ग्रुप में, राइट। नाउ ओके, वैलेंसी 0 ओवर हियर. Let's discuss across the period. This is very interesting, right? Let's take we are talking about the second period, right? Lithium, beryllium, we have the boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Argon is in second one. Okay, so let's start with the structures, right? Electron structure. So electron structure for the lithium, that is 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, and we just extend it. Now see the valency. Valence electron क्या हो रहा है basically, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valence electrons across the group, across the period, right? Valence electron across the period increase हो रहा है, right? Okay, so for this is for the that one. Now let's talk about the valency. Valency का क्या हो रहा है? Valency, what is happening? See the valency 1, 2, 3, 4, बस अब 5 नहीं आनी है, याद रखो। फिर 3, 2, 1, 0, मतलब पहले वैलेंसी इंक्रीज होती है, फिर वैलेंसी डिक्रीज हो जाती है 0 पे, राइट? याद रखो, दैट इज व्हाट वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। पहले वैलेंसी इंक्रीज होनी है, फिर वैलेंसी डिक्रीज हो जानी है, याद रखो। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड. Now just a basic idea, valency increases from 1 to 4 till group 14 and then decreases to 0 from group 15 to 18, right? 15 to 18 में valency 0 हो जाएगी, right? So now just let's conclude that down the group what is happening, outer electronic configuration is same, मतलब outer shell में जितने electrons है down the group सभी में same होने हैं। उसकी वजह से क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे और वैलेंसी सेम रहेगी what, डाउन दी ग्रुप। अगर आप नीचे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में, तो आपको वैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, सेम रहेंगे what, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी. नाउ अक्रॉस the period left to right, what is going to happen, valency increases first then decreases, yaad rakho. So this is the behavior of the valency, this is the trend of the valency into the modern periodic table. Down the group same rehti hai and across a period, right, it is increases first and decreases finally. So this is the trend of the valency into the modern periodic table.